Hello, my little friends. Whether you want to make it a card for Happy Independence Day, yes, you can make it with the help of Tux Paint. So let's start. So first of all, we will go for new. आप न्यू में जाएंगे, आपको जो कलर सिलेक्ट करना है वो कलर सिलेक्ट कर सकते हैं. I will just go with the white and yes, I will go with open. ओके एंड यस हम यहाँ शेप्स ले सकते हैं. यू कैन टेक द लाइन टूल. आई विल जस्ट टेक द लाइन टूल. आई विल सिलेक्ट द ब्रश. मैंने ब्रश की साइज़ और मुझे जो कलर चाहिए वो ले लिया. राइट एंड आई विल ड्रॉ द लाइन. ओके एंड यस you can see over here that it's very easy to make it in the Tux Paint. Right, आप अच्छे से बना सकते हो. You can go with the undo options to if you want to change it the this shape or the color. Right, तो आप कर सकते हो. If you have more options, yes you can go with that. और मैं यहाँ से फिल कलर लेती हूँ. देखिए ये कलर हो गया एंड यस वी विल गो विद द सर्कल. तो हम लोग यहाँ पेंट यानी ब्रश टूल से हम लोग इसमें सर्कल बनाएंगे. ओके सो आई विल जस्ट टेक इट द ब्लू कलर विद दैट. ओके एंड आई विल कलर इट, fill the color with blue. Okay, and yes, if you want a greenery over there, you can go with the magic tool over there. Right, तो आप magic tool का यूज़ करके आप grass बना सकते हो. You can make it grass over here. Okay, and with that if you want flowers, yes you can make it flowers. Okay, then there are many things you can give the patterns over there. Okay, so if you want to give the patterns, I don't want to give the patterns over there. Right, तो आप ये भी कर सकते हो. and yes, directly I will go with the card. Means I want to give the name, so I want to write it over here. 75th I've written and press enter. Then again I will change the tool and now I will change the color. So I want to green color and I want to write it happy. No, orange. We will go with the orange and we will write it happy. Okay, and now what we have to do? We have to select another tool because we want to come out of it. फिर से टेक्स्ट लेना है और आपको लिखना है. तो मुझे पहले कलर सिलेक्ट करना है. आई वांट टू सिलेक्ट द कलर ओवर योर ब्लू अगेन एंड आई वांट टू गो विथ इट. तो मैं यहाँ इंडिपेंडेंस डे. Okay, press enter and then again I will go with the selection of the another color and then I will write it over your day. Even you can change the font from here. आपको right side में जो दिख रहा है वहाँ से आप font change कर सकते हो. Okay, so you have many font options and yes you can save it. You can take it the screenshot in your mobile. आपको अगर मोबाइल में करना है then you have to take the screenshot and you can send the card to your friends, relatives. And happy Independence Day everyone. And if you like it, please like, share and subscribe my channel. Thank you.